Welcome to the Appraiser English Educational Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today our topic is present continuous tense. Before moving toward our topic, if you haven't subscribed to my channel, please take a moment and subscribe it. Make sure to hit the bell icon so that you can get the notification for my new videos. Before moving towards the rules of present continuous tense, let's revise the main points of the sentence like subject, verb, helping verb, object. सब्जेक्ट क्या है? जो कि डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म करता है. There are two types of subjects, singular subjects and plural subjects. Singular subjects he, she, it. Plural subjects I, we, they, you. Verb is an action word. Helping verb is a word that helps the main word. Object is a word on which the action is going on. वो काम जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है. सब्जेक्ट जो खुद काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है. Let's discuss the identification, form of verb and the helping verb of present continuous tense. We can identify the Urdu sentence of present continuous tense by seeing the ending words of the sentence as the identification of the present continuous tense is रहा है, रही है, रहे हैं. अगर किसी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा. And form of verb that we use in present continuous tense is first form, and we add ing with the first form of verb. For example, crying, eating, writing, reading, etc. Next thing is helping verb. Which helping verb we use in this tense? There are three helping verb: is, are and am that we use in the present continuous tense according to the subject. Is used with the singular subject, are with plural subject and am is used with the I, singular I. So singular subjects, as we have discussed earlier, that singular subjects are he, she, it. Plural subjects are we, they, you and I के साथ हम यूज करेंगे am. Formula for the affirmative sentence or the positive sentence of present continuous tense is this. We write subject at the start of the sentence, then we write helping verb, then ing and then object. You can see the example, वो स्कूल जा रहा है. As we have discussed कि end में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं. तो यहाँ पे रहा है तो ये present continuous tense है. अब वो स्कूल जा रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल. हाउ? हमने कहा सब्जेक्ट इज ही, हेल्पिंग वर्ब इज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमने इज यूज किया. वर्ब यूज किया गो और उसके साथ ing ऐड किया. टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल. So he is going to school is the present continuous tense, and this is the affirmative or the positive sentence. Let's discuss the structure formula of negative sentence of present continuous tense. We add not in the negative sentence. Look at this. We will write subject, helping verb, not, verb, ing and object. वो स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं शो कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है. और जब हम इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो इट विल बिकम ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज एंड वी विल ऐड नॉट टू रिप्रेजेंट नहीं, एंड गोइंग वर्ब प्लस ing and school is the object. Interrogative sentence, the structure formula of interrogative sentence is this.
helping verb, we will write helping verb at the start of the sentence, then we will write subject, then verb, then ing and object, एंड आखिर में क्वेश्चन मार्क. सो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देना है इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. यू कैन सी द एग्जांपल, क्या वो स्कूल जा रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चनिंग सेंटेंस, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो वी विल राइट इट लाइक दिस. इज लिखेंगे हम सबसे पहले क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. देन ही जो कि हमारा सब्जेक्ट है, एंड गोइंग, एंड देन स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और आखिर में हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज द क्वेश्चन. I hope this video will be helpful for you. If you want to watch such more informational videos, then make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get the notification for the new videos. Thanks for watching.